Hello everyone, welcome back to Nurse Point with Sam. In today's topic, we are going to talk about types of IV fluid, an essential topic for nurses and healthcare students. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो आपको टाइप्स ऑफ IV फ्लूइड समझने में आसानी हो। तो आपको जैसे पता है कि our body is made of 60% of water, and this body fluid is distributed in different compartments, and those compartments is called intracellular fluid and extracellular fluid, and these fluids helps in transport of nutrients, oxygen and waste products throughout the body. So first हम देखेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड. इंट्रासेलुलर फ्लूइड फाउंड इनसाइड दिस सेल, मतलब जो सेल के अंदर फ्लूइड है उसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं. टोटल हमारे बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स है, मतलब जितने सेल्स है उतने टिन्नी इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट्स है. बट कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड इज इन ऑल द सेल्स आर ऑलमोस्ट सेम. टोटल फ्लूइड इन ऑल द सेल्स इज अबाउट 40%, मतलब 2/3 ऑफ बॉडी वाटर. सो नेक्स्ट देखेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. इट फाउंड्स आउटसाइड दिस सेल and it has two sub compartments. Okay, so first one is interstitial fluid. It is space in between the cell, and second one is plasma. It is free fluid in the blood. Okay, and it makes about 20%, मतलब 1/3 of the body water. तो fluid in body cavity, तो उसमें synovial cavity, peritoneal cavity, pericardial cavity, space in brain and spinal cord, etc. तो वो फ्लूइड्स को हम ट्रांससेलुलर फ्लूइड बोलते हैं. ओके, सो एक चीज याद रखिए, प्लाज्मा इज द मेन मीडियम फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एक्सचेंज इन बिटवीन द कंपार्टमेंट्स. सो अब हम देखेंगे वाटर आईवी फ्लूइड्स. IV fluids are the liquids that are given to the patients directly into the veins to maintain hydration, restore electrolyte balance and deliver medications. Okay, so they are mainly classified according to their compositions and how they affect the body fluid. Next, there are three main types of IV fluids. First one is crystalloids, second colloids and third is blood products. तो फर्स्ट हम देखेंगे क्रिस्टोलॉइड. क्रिस्टोलॉइड्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड IV fluid and they contain water and electrolytes. Okay, they are further divided into three types. तो कौन से है? आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन. तो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे. सो फर्स्ट देखेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन. आइसो मतलब इक्वल. ओके, सो द फ्लूइड सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू दैट ऑफ ब्लड प्लाज्मा. तो उसमें एग्जाम्पल कौन से NS, RL and 5% dextrose. Okay, so they are used for hydration and to treat dehydration and shock. नेक्स्ट देखेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन. हाइपो मतलब लो, so the fluid solute concentration is lower than the blood plasma. Okay, so example half NS and 0.225% NS. Okay, so they are used when cells are dehydrated like in diabetic ketoacidosis. तो जब भी हम ये फ्लूइड देंगे तब कॉम्प्लिकेशंस लाइक हाइपोनेट्रेमिया एंड एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं. ओके, तो थर्ड वन हाइपरटोनिक सोल्यूशन. हाइपर मतलब हाई. ओके, सो द फ्लूइड सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज हायर देन द ब्लड प्लाज्मा. तो एग्जांपल्स 3% NS, 10% DNS, 25% डेक्सट्रोज एंड 50% डेक्सट्रोज. ओके, सो नॉर्मली पेशेंट को हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया ऐसे कुछ रहेगा तो ये नॉर्मली फ्लूइड देते हैं. और इनकेस एक फ्लूइड देने के बाद पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस लाइक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, देन हाइपरग्लाइसेमिया होने के चांसेस, देन हाइपोनाइट्रेमिया ऐसे होने के चांसेस बहुत रहते हैं. सो याद रखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कीप द बैलेंस बिकॉज द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू द ब्लड प्लाज्मा. ओके, hypotonic solution makes cells swell because the fluid solute concentration is lower than the blood plasma, and the hypertonic solution water moves out of the cell causing it shrink because the fluid solute concentration is higher than the blood plasma. So next देखेंगे colloids. Okay, so colloids contain large molecules like protein and they stay long in bloodstream. Okay, and they don't easily pass through capillary walls. Because of this, colloids pull fluid from tissue into blood vessels, helping maintain blood pressure and increase blood volume. Okay, so examples like albumin, dextrose, hetastrase. Okay, and normally it is used in cases like shock and major burn to keep the body fluid balance stable. So next, blood products. Blood products are the different components of blood that are separated and used for specific medical purpose and needs. Okay,
तो नॉर्मली उसमें पीसीबी, होल ब्लड, प्लेटलेट, देन एफएफपी, उसमें बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स है। फॉर एग्जांपल पीसीबी हम सिर्फ पेशेंट को, नॉर्मल पेशेंट को अनीमिया है, ब्लड लॉस हुआ है तो पीसीबी का ये यूज़ करते हैं। इनकेस पेशेंट का प्लेटलेट्स काउंट कम है तो हम प्लेटलेट देते हैं। इनकेस पेशेंट को क्लॉटिंग फैक्टर डिसऑर्डर कुछ तो है, नहीं तो लिवर डिसीज कुछ तो प्रॉब्लम है तो एफएफपी देते हैं। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के ब्लड प्रोडक्ट्स है। So we have learned the type of IV fluid, crystalloids, colloids and blood products. Okay, so each type has its own purpose in maintaining fluid balance and supporting patient care. Giving the right fluid at the right time saves lives. So if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more nursing educational videos. Thank you.